Jai Jagannath, lucky. Okay, welcome to Ada 247 OPSC session. I'm SK Rout here. पिलाने काली हमें MCQ रखते फंडामेंटल राइट्स रो आज हमें कंबाइन रखिबा फंडामेंटल राइट्स और DPSP ऊपर किछिटा रखिबा. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, आरंभ करिबा OPSC सेशन रो एवं विशेष में तो जानी थिबो आज जो माने OPSC प्रिलिमिनरी अपियर करछो तांको पे डेट फिक्स कर दिछथि कमिशन 15th डिसेंबर रे कोन हबो OPSC प्रिलिमिनरी 2023 रो परीक्षाटा हबो जोटा 1 तारिख टेंटेटिव पे हितला सेटा 15th रे कमिशन फाइनलाइज करले 15th संडे रे हबो. तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन एवं आडा 247 रे एटा कैरी आउट हबो. जे कोनसी जिनसटा आरंभ हम जहाँ जमी चलती आमर सेसन गुरा सब रिविजन सेसन आरंभ हम बहुत सारा सेसन तो आम अलरेडी कर सारीचे. तेणु एमती रिविजन सेसन गुरा सब चलेबा आम पाखापाखि आहरी आम पाखे मसे उपर टाइम रही. सो यू कैन रिवाइज द बट रिमेम्बर जिते टाइम बढ़ो से कंपटीशन भी टफ हो पारे. तेणु जो मैंने सीरीयस नथिबे से माने सीरीयस हो जाई पारंती नहीं कि तेणु बहुत सारा चैलेंजेस रही पारे. तेणु से टिके डीपली देखिए. आरंभ करिया आम डायरेक्ट MCQs ऑन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स. तो आज फंडामेंटल राइट्स ऊपर आम किसी क्वेश्चन रखिबा. काली मु फंडामेंटल राइट्स रो विशेषत्व कही. फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेली सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस रे कहिसंती. फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी इन्फ्रिंज्ड, डाइल्यूटेड, डिस्टोर्टेड हो पारिबनी मौलिक अधिकार गुड़िक. तेणु से गुड़िक सब ठीक से पालन होबा दरकार एवं देयर आर सर्टेन प्रोविजन्स व्हिच द स्टेट कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट. किंतु फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन बेली मु कहिछि. तेन तापरे किछि क्वेश्चन देखिबा. तापरे हमें DPSP ऊपर आसीबा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी MCQs जोरा हम कहली. तो पिलाने DPSP तो गोटे लॉन्ग माने गोटे बहुत बड़ कॉन्सेप्ट. DPSP गोटे यूनिक प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट फॉर द कंट्री. DPSP is meant to provide social and economic democracy, empowerment of the weaker section, the depressed classes, the women, the backward classes, the transgenders, the disabled, जो माने weaker section, जो माने disadvantageous sections, but जो माने prioritized नुह section जो माने due to their socio-economic condition they are unable to make a standard life for themselves. से कॉन्स्टिट्यूशन रे तांको पे व्यवस्था है. ठीक अच्छे प्रतीक, थैंक यू. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि DPSP कहीं भारतीय संविधान रे रही. DPSP रहिबार कारण होउची भारत स्वाधीनता समय रे गोटे अंडर डेवलप्ड कंट्री थिला एवं मेजॉरिटी पॉपुलेशन बैकवर्ड क्लास थिले. इलिटरेसी, प्रॉवर्टी, बैकवर्डनेस और बहुत सारा चैलेंजेस गुरा थिला. एवं बेसिकली जो कास्टिस्टिक डिवीजन थिला समाज रे जाति व्यक्ति रे जो डिवीजन हेतिला सेतिरे किछि कास्ट लोक थिले जो माने ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज से माने प्रोग्रेस करि पार नथिले. त माने देयर वेयर ए कंसीडरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी बिलोंग टू द वीकर सेक्शन. से संविधान रे वीकर सेक्शन मान गोटे स्वतंत्र व्यवस्था करागला इन DPSP. एवं एथिरे राष्ट्र को बा सरकार को निर्देश दिया जाइछि कौन कौन कले केमिति जाति बा केमिति जातीय नीति निर्धारण करिवो एवं जातीय नीति निर्धारण कला बेले कौन कौन दृष्टि को नबो. सेति ताना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. द डायरेक्टिव मीन्स इट गिव्स डायरेक्शन टू द state and for what, while devising policy, state policy or national policy or regional policy जेतेबे सरकार करिवे सेतेबे किछि कथा को से दृष्टि को नेबे. तो सेटा होची DPSP. तो DPSP होची द गाइडलाइंस. These principles are guidelines to the state which should be taken into consideration while making policies, programs and schemes. It therefore aims at empowerment of the weaker section.
weaker section of means the backward classes, the women, disabled, transgenders, जो माने disadvantageous circumstances रे अछंती, जो माने अवहेलित निष्पेषित है कि रही आसथिले सेमानकर इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट पई यथेष्ट परिमाण रो व्यवस्था रही डीपीएसपी रे एवं आजी जदि कंट्री रो गोटे बैलेंस्ड ग्रोथ होता है आज जदि कंट्री रो गोटे बैलेंस्ड ग्रोथ होता है ताल ड्यू टू डीपीएसपी बोली कहा जाए बिकॉज डीपीएसपी एम्स एट कौन प्रोवाइडिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन that are the objective of a welfare state. ठीक है पिलाने तो DPSP is found mentioned in part IV of the constitution article 36 ରୁ 51 रे DPSP अछि DPSP ର लक्ष्य हैला गोटे जनमंगलकारी राष्ट्र गठन करिबा आज भारत वर्ष रे जो बैलेंस्ड ग्रोथ होउची सबु सेक्शन रो लोक विभिन्न एंगल रे डेवलप करिया पई उद्यम जारी रही तार कारण होची डीपीएसपी तो सेटा विभिन्न प्रकार रो अछि गोटे सोशलिस्ट प्रिंसिपल अछि गांधीयन प्रिंसिपल लिबरल प्रिंसिपल तो आमे गुरा सब डिटेल्स पढिया पडियो कारण डीपीएसपी गोटे बहुत थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन रो ताकू भलो बार एनालिसिस करिया पड़े एवं गवर्नेंस पार्ट की सोशल जस्टिस पार्ट रे डीपीएसपी रो इंपोर्टेंस बहुत रही छी तेन डीपीएसपी गोटे बहुत वाइटल चैप्टर सिविल सर्विस एस्पायरेंट मानम पई तेन ता ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार मत रही छी भिन्न भिन्न प्रकार डायरेक्शन रही छी एवं को प्रिंसिपल गुरा इम्प्लीमेंटेशन हेची को प्रिंसिपल गुरा इम्प्लीमेंटेशन हेई परिनी तार ड्रॉबैक कोन एवं से इम्प्लीमेंटेशन रो कोन लैकुना रही एवं सोशल जस्टिस और सोशल डेमोक्रेसी व इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टाब्लिश हबारे कोन कोन समस्या मन रही सेटा डीपीएसपी पढ़िले ही हम जानि परिबा ठीक है पिलाने तो आप ये चैप्टर को माइंड रे रखतिबो डीपीएसपी इज वेरी इंपोर्टेंट सो आसीबा में एवं चैप्टर आईबी चैप्टर आईबी रे अछि हमें कली पढ़िथिले केते 12 जाय क्वेश्चन जाइथिले 12 12 जाय क्वेश्चन जाइथिले हमें आसी जीवा से जाय धीरज रखो एटा जाइछि बडे एटा जाइछि 13 ओके एटा जाइछि ना नहीं एटा जाइछि 14 जाइछि रे अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ यस 14 नु आसीबो एटा भी डीपीएसपी ऊपर आसीबो कैन यू आंसर एट एमसीक्यू पैटर्न में नबा जो माने जॉइन करूछ जति के पिला भी जॉइन करो किछि असुविधा नहीं जो माने भी जॉइन करूछ आंसर दियो जदि आंसर न आछि हम बुझे देबी बट इट इज अ मॉक टेस्ट लाइक मॉक टेस्ट समस्त जल्दी जल्दी आंसर दे दियो यस कौन लिखाई छी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स व्हाट कौन टा वायोलेट करछि कोटा वायोलेट होछि जदि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ माने कोन किछि लोकों को हाथ रे सब देशर अर्धाधिक पैसा रहिबा जते बेले देश स्वाधीन हला सेते बेले 5% शतकड़ा 5 भाग लोकों को पाखरे देशर 90 भाग रिसोर्सेस रहितिला दैट इज कॉल्ड कोन इम्बैलेंस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो जदि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हैला तले कोटा वायोलेट हबो राइट टू इक्वालिटी वायोलेट हबो ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल वायोलेट हबो ना राइट टू फ्रीडम वायोलेट हबो ना द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर वायोलेट हबो प्लाने क्वेश्चन टा गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा पचारिबार कारण होउची आर्टिकल 39 बी रे सॉरी आर्टिकल 39 बी रे आर्टिकल 39 बी आर्टिकल केते कहली आर्टिकल 39 बी रे अरे नबुल एडिटिंग करनी के रे अच्छा आर्टिकल 39 बी रे आर्टिकल 39 बी जदि देखियो सेतरे अछि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो सेटा वायोलेट हबो जो देश रे सेति पे हमर कोन कराई छी को डीकंसंट्रेशन पे वेल्थ डीकंसंट्रेशन पे कोन कराई छी कहली स्टेप गुरा what steps have been taken by the state to make deconcentration of wealth for example जो हमर कोन इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होउची का को लोअर इनकम ग्रुप मान को
जोटा एबव बिलो 7 लाख जो माने इनकम करछन ताकू सरकार किछि टैक्स नउनी ता द्वारा कोन होउची जो माने लोअर इनकम ग्रुप लोक तांको पकरे पैसा रहउची तनो इनकम टैक्स प्रोविजन बाय इनकम टैक्स एक्ट बाय इनकम टैक्स प्रोविजन टा भी डिकनसेंट्रेशन करूची वेल्थ को आउ कोन सब्सिडी दिया जाउची जो माने वीकर सेक्शन जो माने पुअर सेक्शन लोक नीडी सेक्शन लोक बीपीएल लोक तांको सब्सिडी दिया जाउची हाँ आ सब भिन्न प्रकार फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाउची जेमती हमर कोन सुभद्रा योजना हला कि हमर गोपबंधु ग्रामीण आरोग्य योजना हला जेमती सरकार दउची किसान योजना किसान विकास जो दउची तो सेगुरा सब काहा को दिया होची बिलो पॉवर्टी लाइन मान डिकनसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो डिकनसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ में सब्सिडी दी अच्छी डीबीटी कराई डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर कराउची एवं लोक मान पाखे जो मैंने लोअर इनकम ग्रुप बा जो मैंने एवरेज इनकम ग्रुप लोक रहिले तांकू केमती सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस दउची गुड इवनिंग प्रकाश तो बुझेले बुझी परछ ना नहीं कह कॉन्सेप्ट बुझे बुझे मु नउची तुमको तो सेगुडा आमे बुझी परले निज मातृभाषा रे जदि आमे बुझी परिबा तले इंग्लिश रे लेखिबा किछि ओटा असुविधा न language is a medium, don't worry about language, it will be expressed automatically if you understand the concept. तो डिकनसेंट्रेशन केमती होची जो प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन केमती होची ना इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स पॉलिसी गवर्नमेंट रो इनकम टैक्स पॉलिसी सब्सिडीज दिया होची पुअर लोक मानकू आउ कोन बिना फ्री जोटा हमर दिया होची कोन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिफरेंट सेक्शंस फॉर एग्जांपल सुभद्रा योजना इन ओडिशा नहीं कि बहुत सारा टैक्स एग्जेम्पशन करा होची जो माने 7 लाख एबव बिलो रहिबे जो माने लोअर इनकम ग्रुप ताको तो सरकार टैक्स नउनी से माने 0% टैक्स रिटर्न फाइल करछंती जो माने 7 लाख ऊपर रहिले से मानकर अधिकार होची तो that is why the answer will be DPSP article 39B. Answer होबो कोन B. क्वेश्चन गोटे केमती एंगल ले पचारछि देख कोटा वायोलेट होछि पचारछि नेक्स्ट आसीबा में क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्वेश्चन नंबर 14 कोन अछि देखो Which of the one of the following Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that Indian polity is federal in character? Could have a best answer. The independence of the judiciary is safeguarded. The union legislature has elected representatives from the constituent units. The union cabinet can have elected representatives from the regional parties. The fundamental rights are enforceable by court of law. Yes. 39B and C. अच्छा रश्मि रेखा अच्छा देखी दउछि ना टिके अच्छा मोटे मिसस्पेल्ड हे जेछि बदे म कहय रे हां हो तो दैट इज इटा कोटा वायोलेट होछि कोटा वायोलेट हबो कोटा वायोलेट हबो जो सॉरी कोटा इंडिकेट करछि कि एटा फेडरल कैरेक्टर बेली 39B इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस नहीं रे मु 39B कहि दिछि अच्छा सॉरी से बड़ा करछ 39B टा होछि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस आर्टिकल 39B एटा होछि प्रिवेंशन ऑफ 39C अच्छा ठीक कथा एका जिंस सेटा भी वेलफेयर रे जिवो सेटा भी जो वायोलेट रे दैट मींस मैंडेट्स दैट देयर शुड डायरेक्ट पॉलिसीज मटेरियल रिसोर्सेस 39B टा होछि यस 39B कहि दिछि ओके यू आर राइट रश्मि रेखा very good for observing yes that will be 39C पिला माने 39B मु मिसस्पेल्ड कर दिछि ठीक है तो 39B और C दीटा जा कहउछि वेलफेयर स्टेट रो कांसेप्ट उटे 39B टा होछि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस 39C टा होछि सॉरी सेटा डिकनसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन तो एटा आंसर कोन होबो एटा आंसर एनीवन व्हाट विल बी द आंसर to this question कोटा इंडियन पॉलिटी को फेडरल बेली करूचे फेडरल रो मेन कैरेक्टरिस्टिक कोन
फेडरल मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन फेडरल मेन कैरेक्टरिस्टिक है डिविजन ऑफ पावर इथरे नाही सेटा आउटे कौन हम आउटे डुअल गवर्नमेंट सेटा भी नाही डुअल कॉन्स्टिट्यूशन सेटा तो इंडिया रे नाही इंडिपेंडेंट जुडिशियरी टा होची मेजर पार्ट तार तो एटा आंसर ऑफ ए यस वेरी गुड आंसर ए डेस्टिनी तर ना कौन प्रॉपर ना कौन कहते ना भल लगे देखले नहीं कि डेस्टिनी यस आसवा 16 को पिलाने फिर फेडरेशन रो मेन कैरेक्टरिस्टिक होची डिवीजन ऑफ पावर्स रहिबो फेडरल रे तापरे कौन डुअल गवर्नमेंट रहिबो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रहिबो डुअल सिटीजनशिप रहिबो एगुरा सब तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अच्छी ओके लुक एट क्वेश्चन नंबर 15 एटा 15 तो 16 Which one of the following statement is not correct? Secularism is core part of the Indian Constitution of India as declared by the Supreme Court recently. It was declared as a part of basic structure of the Constitution in Kesavananda Bharati case 1973. Fundamental right in part 3 contains secular provisions. In part IV of the Constitution there is no hints about secularism. What will be the correct answer? Sonu. Yes, very good. Destiny रो ना हला सोनू एते बढ़िया नाटा पाइछु डेस्टिनी कहीं देछु नाटा ठीक अछि समस्ते प्रॉपर नेम रे आसो सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज यू एंड आई कैन रिमेंबर यू ठीक अछि डोंट हैव योर ऑनलाइन नेम एंड ऑफलाइन नेम डिफरेंट एटा कौन हम आंसर क्वेश्चन नंबर 16 रो आंसर कौन हम जल्दी जल्दी कहि दे समस्ते बी एंगेज्ड रश्मि रेखा यस रश्मि रेखा जानी एटा कौन हम कहूछु सी टा कौन काहे कि फंडामेंटल राइट्स रे कौन सेक्युलर प्रोविजन नहीं फंडामेंटल राइट्स रे पूरा आर्टिकल 25 28 हला मेन 29 30 हला मेन सेक्युलर प्रोविजन सेगुरा 25 रू 28 टा सेक्युलर नो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन और 29 30 टा माइनॉरिटी सेक्शन को प्रोटेक्शन अच्छी तेणु से सेक्युलरिज्म माने कौन जो माइनॉरिटी रिलीजन को प्रोटेक्शन दिया होती है सेक्युलरिज्म यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट तो रश्मि रेखा बुझेला कि नहीं हाँ बढ़िया बुझा दरकार सॉरी कौन पे कुछ भूल करवाटा ही आमर काम भूल कले सार अच्छा 247 OPSC अच्छी तो एगुरा सब कहीं अच्छा तुम्हें तो सब ठीक करदेव मैंने सब कौन कर बुझीपार ना भूल नहीं सॉरी नहीं नो सॉरी किसी भूल सॉरी कौन थे तू किसी कौन गलती कलु आंसर कही पार्लुनि से कौन ठीक अच्छे तो दैट इज देयर कि पार्ट आईवी रे जो अच्छी हमर 25 रू 28 है सेक्युलर प्रोविजन्स सेक्युलरिज्म रो मेन पार्ट पर फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपागेट एनी रिलीजन एटा गोटे सेक्युलर 26 27 28 भी सही सेक्युलर पाई रही 29 30 टा कौन अच्छी कौन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट तेणु से सेक्युलर जो देश में धर्मनिरपेक्षता थाए से देश में संख्यालघु धर्मीय संप्रदाय मान सुरक्षा दि जाए ना सेक्युलर केमती हेलु आम बुझीपार ना सेक्युलर माने हूँ जो मैंने मेजोरिटी रिलीजन है धर हिंदू धर्म है प्रोटेक्शन कौन दरकार से तो मेजोरिटी अच्छा माने इन द सेंस प्रोटेक्शन माने कौन से धर्मीय भावना प्रति किसी ये आसबनी कारण मेजोरिटी लोक से हिंदू किंतु जो देश में मेजोरिटी लोक जो मैंने माइनॉरिटी वाला रहिले माइनॉरिटी रिलीजन वाला रहिले इंटरेस्ट 29 30 अच्छी गॉट इट और नॉट सो देयरफॉर इट इज देयर बट एटा भूल हम डी भूल हम कि नहीं डी कहीं भूल हम कह डी रे से कहूँ नो हिंट्स अबाउट सेक्युलरिज्म हिंट्स अच्छी ना नहीं कह कौन अच्छी आर्टिकल 44 कौन यूनिफॉर्म सिविल कोड एटा गोटे सेक्युलर प्रोविजन यूनिफॉर्म सिविल कोड टा कौन सेक्युलर प्रोविजन आ जो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स 48 रे 49 रे
मो कथा 49 टा भी सेकुलर हबो एटी सब मॉन्यूमेंट्स कथा कुआई छी ना एटी इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स यूसीसी यस यूसीसी जो अछि सेटा गोटे मोस्टली सेकुलर प्रोविजन यूसीसी माने कोन यूनिफॉर्म सिविल कोड समान सामाजिक नियम यूनिफॉर्म सिविल कोड that irrespective of religion one will be abided by the single civil law माने कौन मैरिज लॉ डिवोर्स लॉ लैंड इनहेरिटेंस लॉ अडॉप्शन लॉ एरा सब सिविल लॉ उरा बुझी परछन सेगुरा सब डिफरेंट सिविल लॉ उरा सब डिफरेंट अछि सिविल लॉ टा यूनिफॉर्म हेनी हमर क्रिमिनल लॉ टा यूनिफॉर्म केमति ना हमर गोटे भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय जो कौन साक्ष्य अधिनियम एगुरा सब कौन क्रिमिनल लॉ से सब समान कि नहीं अरे मो कथा बुझी पार्छ ना बुझी पार तो से सिविल लॉ टा यूनिफॉर्म नहीं मैरिज लॉ यूनिफॉर्म नहीं हिंदू मैरिज एक्ट इस्लामिक मैरिज एक्ट एरा सब अच्छी भिन्न भिन्न प्रकार रे मैरिज होउची भिन्न भिन्न प्रकार रे डिवोर्स होउची जो ट्रिपल तलाक एक्ट कराई छी सेटा ट्रिपल तलाक एक्ट गोटे यूनिफॉर्म सिविल कोड रो गोटे स्टेप फॉरवर्ड तेनु यूनिफॉर्म सिविल कोड हम देश रे इंप्लीमेंट हेनी जदियो गोवा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू द ओनली स्टेट एंड उत्तराखंड हैज इनिशिएटेड एबे उत्तराखंड रे कोन हेलानी मु कहि परिउनी तो मु सेटा देखिनी के न्यूज माने मोर नजर रे नाही किंतु भारत रे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं एंड रिमेंबर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए मेजर टॉपिक बा मेजर इश्यू फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स तेणु यूसीसी उपरे हमरो कंप्लीट आइडिया दरकार यूसीसी रो चैलेंजेस कोन यूसीसी रो एडवांटेजेस कोन यूसीसी रो डिसएडवांटेजेस कोन यूसीसी भारत रे इंप्लीमेंट हबा कथा कि नहीं ए सब उपरे तमरो मतामत मगा जाई थाए परीक्षा रे तापर नजर दियो आम निश्चित भाव में आम रेगुलर क्लास संपूर्ण भाव में आलोचना करुचु तेणु सेठी देखिबा नल जदि हम यूट्यूब रे गोटे सेशन आनिबा आम यूनिफॉर्म सिविल कोड उपर विधिबद्ध भाव में आलोचना करबा ठीक अछि त माने एटा आंसर हम डी बुझियला डाउट हेले कह बहुत सारा बढ़िया बढ़िया पिला सब रोच टैलेंटेड पिला नहीं कि तो सेमन सब एंगेज रहो तुम्हें सेतिके आसले काफी ठीक अछि जेतिके आसो किंतु भल पिला आस जो माने पाठ पढ़िबार इंटरेस्ट बा सिविल सर्वेंट जो कैरियर नबर जो माने इंटरेस्ट नहीं छ से माने आसिकी ये करो असम करिबा आरंभ करिबा हमें 16 गला 17 in the context of polity which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty yes anyone पिला के आसुना रे कई व्यूअर्स अधिका सब पिला आसुना बेसी आसुले ना से टॉपिक गुरा किसी इच्छा लागुन देखि देखि टॉपिक भाबु जो या सार तो डीपीएसपी करिवे आ मोर हे जाइछ नहीं कि ए सब नीति ना कोन यूट्यूब रे सब सेशन रे आसो बसो टिके ଏବଂ ସେଗୁରା तुमको निश्चित भाव में लॉन्ग टर्म देखियो बहुत हेल्प करिवो यू आर फॉर्चुनेट एनफ तुमने समस्त भाग्यवान कि तुम समय इंटरनेट अच्छी तुम समय अड्डा 247 ओपीएससी भाया चैनल सब अच्छा भिन्न भिन्न यूट्यूब चैनल सब रही केते ज्ञानर परिसीमा केते परिवर्धित करी होउछि नहीं कि बहुत बढ़िया रश्मि रेखा कहला बी यस वेरी गुड बी हैव आंसर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शन स्वतंत्रता माने कौन नियंत्रण अभाव रे स्वतंत्रता आसी जदि तते सब रोकब जड़े रेस्ट्रिक्शन करू तू केतबेले जीवु कौन खाइबू कोठी रहबू कौन करू केतबेले आसबू कोटा चॉइस करू जदि सब बेले तते जड़े रेस्ट्रिक्ट कर तू स्वतंत्र नुह स्वतंत्र माने कौन निज द्वारा जी परिचालित तेणु absence of restraint is the major concept. Liberty is but not absolute. Liberty absolute no. जदियो liberty absence of restraint, किंतु liberty is not absolute. Can be restricted.
it can be restricted in the larger interest. Freedom of speech expression hella, freedom to form assembly hella, freedom to form association hella, freedom of movement hella, freedom of residence hella, freedom of occupation hella, all are not absolute in character. In fact, nothing is absolute in political science, in polity. So liberty provided under the Constitution, under Article 19, is also subject to reasonable restriction made by Parliament. And we have already discussed the grounds on which liberty are restricted. Liberty, equality and fraternity. Liberty, equality and fraternity are inseparable and integral. देखो अंबेडकर कौन कहते तीनटा को कौन अंबेडकर कहते तीनटा को लिबर्टी फ्रैटर्निटी और कौन से कहली इक्वालिटी को लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी को अंबेडकर कौन कहते जो जानी लेखे ना मुझे कहीदेवी व्हाट डज अंबेडकर से अबाउट लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी हाउ डज ही डिस्क्राइब इट कौन से गोटे शब्द से कहते ये तीन टा गोटे शब्द ना देते कहि से फर्स्ट आंसर है कौन तेले बी आसवा आम नेक्स्ट क्वेश्चन को which of the following regarded as the main feature of rule of law which of the following is feature as main feature of rule of law okay कोटा रूल ऑफ लॉ रो मेन फीचर which of the following is the main feature of rule of law गोटे कौन लिखा है limitation of power equality before law people's responsibility to the government liberty and civil rights good have good evening Rajashri very good evening to you join करो रे टिके पिला जानिबे तुमे इंटरैक्टिव सेशन करो टिके जल्दी बहुत पिला जॉइन करो जो माने एस्पिरेंट अच्छो से माने टाइम्स टिके बाछि की जॉइन करो कमेंट दियो विभिन्न प्रकार इंप्रूवमेंट आनो ओडिसा केमती राइज करिवो ओडिसा राइज केमती करिवो कह जे तुम माने सुप्त हे जीवो न आसीबो फील्ड को तल केमिति कौन करिवो पुनी कौन करिवा कह कौन कहते मधुसूदन उठरे उठरे उत्कल संतान उठिबु तू केते दिने पूर्व गौरव पूर्व साहस पड़िब कि केबे मने नहीं कि तो से कहूँ गुड आंसर सी वेरी गुड सी हम पिला लिमिटेशन और इक्वाली रूल ऑफ लॉ मीन्स लिमिटेशन ऑफ पावर का पावर स्टेट रो पावर लिमिटेशन होनी समस्त को समान देखिए पूरा माने स्टेट आउ मोनोपोली ही परिबन सरकार मोनोपोली ही परिबन तो लिमिटेशन ऑफ पावर गोटे रूल ऑफ लॉ रो एस्पेक्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ आईन आखिरे समस्ते समान इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ समस्ते समान पीपुल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी आसे तो रिलेशन लिबर्टी एंड सिविल राइट्स भी रूल ऑफ लॉ रो मेन जिंस सिविल राइट्स माने कौन द राइट्स व्हिच आर protected by the constitution provided under the law so civil rights माने कौन जोटा लॉ अंडर रे दिया जाए constitution अंडर रे statute अंडर रे से कहती civil rights तेन सब जाए 1 to 4 हम सी yes destiny हाँ ठीक अच्छे एटा ठीक अच्छे सी हम यू आर राइट
आसीबा हमें केते नंबर क्वेश्चन रे 19 क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 19 पळे आसला पिला ने 19 टी देखे which of the following are regarded as अच्छा इटा 19 गला इटा बोले एका जिंस 20 which of the following sorry 20 इटा केते बे 19 हाँ 20 कोड़ा बेटा which of the following reflects the nicest appropriate relationship between law and liberty? कौन हब कुट हब गुड इवनिंग आशीष कुट हब आंसर जल्दी जल्दी आंसर दे दियो बी क्विक किसी गोटे आंसर रेस्पोंड करो किसी गोटे रेस्पोंड करो डर ना जमा बी फियरलेस बी करेजियस वी कैन अचीव आवर ड्रीम इफ वी हैव द करेज नहीं कि आम लक्ष्य स्थल आमर जो लक्ष्य अच्छे हम तो हासिल करें जदि आम पाखे करेज अच्छी बी हम रश्मि रेखा डेस्टिनी बी yes if there are no laws there is no liberty सेटा ही बेस्ट आंसर यदि लॉ न रही तो लिबर्टी किए आसो लिबर्टी लॉ अच्छी बेली सीना लिबर्टी आमर प्रोटेक्टेड होमें कार भायोलेट करूँ क्या हैरान करें कारण लॉ अच्छी पनिशमेंट दब आमको समस्त कहबार अधिक अच्छी आम क्या मना करें तेणु वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी मोर लॉज मोर लिबर्टी सेमती किसी तार मीनिंग आसुनी देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल नो इफ लॉज आर चेंज टू लिबर्टी इज इन डेंजर सेमती कही हेनी लॉ चेंज हो पारे भल सेंस रे हो पारे ठीक अच्छे तो आसवा में यहाँ 20 ताले 20 रो आंसर कौन है पिला ने बी बी अब आंसर यस नेक्स्ट आसवा में नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा किछटा डीपीएसपी ऊपर किछटा अछि मु फोन नेक्स्ट सेशन रे आनी भी फोन नेक्स्ट सेशन रे काली कोन रखी छि मु काली कोन यूट्यूब रे अछि रे फोन गोटे नहीं आस सेसन जिते जिते थर रिवाइज करवा जिते थर आम ताकू घांटा सी से मन रही खाली एमसीक्यूटा खाली प्रिलिम पे इंपोर्टाट नुह एमसीक्यूटा मेन्स पे बहुत हेल्प कर बुझीप जिते एमसीक्यू सेसन बस खाली देखे भल भल सेसन जोटा प्रकृत डिस्कसन होटा देखे देखू तोर मेन्स राइटिंग रे बहुत एबिलिटी पड़े आस बुझीपार ना बहुत पड़े आस एबिलिटी ओके आसवा में इटा नेक्स्ट क्वेश्चन डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी ऊपर किछटा कंटिन्यू करबा फोन नेक्स्ट क्लास रे मु सेमती आनी भी मिसई की एटा कोन हो देखो 21 देयर आर 12 फंडामेंटल ड्यूटीज लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एवरी सिटीजन एटे करो एवरी सिटीजन there is no provision in the constitution for India for direct enforcement of the fundamental duties. One of the fundamental duties of every citizen of India is to cast his or vote in general or state elections as to maintain a vibrant democracy in India. Koda correct कहो two only कोda two only 21 नंबर कुछ तो 21 नंबर आंसर two only तो अच्छा two only अच्छा anyone any other answer from your side आउ किछ आंसर दियो आउ कुछ आई परिबो no one is answering two only yes two only yes C then there are 11 fundamental duties
12 लिखा है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थिला एबे एबे सेटा कोन एबे हे जाई केते हमर 11 हे जाई 11th ड्यूटी टा 86 अमेंडमेंट 2002 रे ऐड हेची तेनु वर्तमान 11 टा मौलिक कर्तव्य रहिची सेटा भूल अछि there is no provision in the constitution for India direct enforcement of fundamental duties सेटा ठीक किंतु पिलाने फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स्ड केमती बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट फंडामेंटल ड्यूटीज टा एनफोर्स हेई परिबो किछिटा फंडामेंटल ड्यूटी एनफोर्स होउछि फॉर एग्जांपल ड्यूटी नंबर 1 टा रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम एगुरा सबु कना सेगुरा सबु एनफोर्स होउछि नेशनल ऑनर एक्ट कराई 1971 रे ताकू अमेंड कराई 2019 2021 एम सब अमेंड कराई ना नेशनल ऑनर एक्ट अंडर रे अछि सब नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग नेशनल फ्लैग ऊपर सब नियम कानून रही छी ता माने कोन ड्यूटी नंबर 1 टा एनफोर्स होउछि सेमती हमर जो अच्छी हमर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स साइट एक्ट अच्छी सेटा ड्यूटी को जो प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स ता ऊपर सेटा इंप्लीमेंट करा होउछि एनवायरमेंटल ड्यूटी जो अच्छी ड्यूटी नंबर जी रे हेटा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल एक्ट हला वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट हला एगरा सब अंडर रे कंट्रोल एनफोर्स होउछि तेनु ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट but they are not provided in the constitution सेटा constitution रे कोहाइल सेटा जे कहूची there is no provision in the constitution एटा ठीक अछि त माने ए दिटा भूल अछि एटा द no one of the caste is or vote सेटा fundamental duty नो पिलाने किंतु सोरन सिंह कमिटी एटा को ड्यूटी को रेकमेंड करथिला सरदार सोरन सिंह कमिटी has recommended duty to pay tax and duty to cast vote ए दुटा सी रेकमेंड करथिले किंतु सरकार एटा को ग्रहण करनथिले जेहेतु आम देश गोटे अंडर डेवलप्ड कंट्री थिला इलिटरेसी थिला ठीक अछि सेगुरा सब कोन सेति पई लोकन को फोर्स करिया पई सरकार चाहिलानी तेनु सेति पई सेटा कोन दिया गलानी ठीक अछि राइट टू वोट ए लीगल राइट माने कोन बुझछो लीगल राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट कोट अंडर अछि 326 अंडर यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज तो सेटा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को भी हम लीगल राइट करि परिबा काइना सेटा गोटे लॉ ना कॉन्स्टिट्यूशन कोन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पेरेंट लॉ कोन गोटे मदर लॉ सेटा कोन ता दियरु तारी ऊपर बेस करी के अन्य लॉ तयारी होचंती तनो कॉन्स्टिट्यूशन भी गोटे लॉ तनो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लीगल राइट कहा जाय किंतु किछिटा एक्स्ट्रा लीगल राइट भी अच्छी जेमती धर कहूची राइट टू पब्लिक सर्विस राइट टू अवेल पब्लिक सर्विसेस जो हमर पब्लिक सर्विसेस एक्ट ओडिसा रे जेमती अच्छी पब्लिक राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट अच्छी जो जन सेवा सरकार जो सेवा जोगे दोचंती सेटा पाइबार अधिकार सेटा होची लीगल राइट तेणु सबू लीगल राइट गुरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट न हो पारे किंतु सबू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आम लीगल राइट कहि परिया बुझि पारल तेणु लीगल राइट माने होची कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तेणु यस राइट टू वोट को आम लीगल राइट भी कहि परिबा कारण दे आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वोट कोनोसी स्टैट्यूट अंडर रे नै 326 रे अछि अच्छा पद्मावती डीपीएसपी रे गोटे क्लास आनिबा डीपीएसपी ऊपर गोटे क्लास आनिबा ठीक अच्छे आनिबा ठीक अच्छे राइट टू प्रॉपर्टी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट राजश्री राइट टू प्रॉपर्टी मु कहल ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आम लीगल राइट भी कहि परिया जदी ऑप्शन रे लीगल राइट नाही देखलु धरो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए डैश राइट ऑप्शन अछि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड धरो आउ गोटे किछि दे देतिबो ट्रेडिशनल राइट ऑल दी अबव ताले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हबो जदी कॉन्स्टिट्यूशनल नाही लीगल अछि त लीगल हबो जदि दीटा जाक अच्छी तू कह सर दीटा जाक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल कारण राइट टू प्रॉपर्टी इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कह जाए फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री पूरा से गोटे लॉ नुह से लॉटा से गोटे मास्टर लॉ ता अंडर रे सब लॉ तैयारी होचंती बुझियला राइट टू प्रॉपर्टी यस 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 यू आर राइट तो आसीबा में एटा पिलाने आंसर 2 ऑफ सी ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
The concept of socio-economic planning has been found mentioned in which of the following list in the seventh schedule to the Constitution of India? The concept of socio-economic planning has been mentioned in which of the following list? Yes, anyone? Jaldi answer दीजिए. What are the qualitative difference between them? कोड़ा qualitative difference between legal right and constitutional right किसी नथा है. There is no qualitative, all are qualitative. Depends को type रो right हमें कहूँचे. Right, धरे right to information. Right to information was first provided under Right to Information Act. Right to information गोटे example ले. Right to information का act रे provide करा. 2005 से Right to Information Act under provide करा गला. तापर सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट केस रे कहिले कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इन द एज ऑफ नॉलेज इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a एंड 21 तमाने सेटा फंडामेंटल राइट हे गला किंतु कोन इम्प्लिसिट सेटा तो क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट इज नथिंग बिकॉज दैट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ राइट वी आर टॉकिंग अबाउट what type of provision we are talking about, that is the difference. ठीक है, qualitative difference सेमती किसी नहीं, किंतु right to a constitutional right जेतु they are mentioned in the constitution, obviously it has more significance or more applicability than the legal right. The right to avail public services is not provided in the constitution. But it is provided under different act. For example, Odisha has enacted Right to Public Services Act 2012. ठीक है, तो सेटा प्रोटेक्शन टा तेनु लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भितर क्वालिटेटिव एतिकी कहि परिबा कि कॉन्स्टिट्यूशन जेतु मेंशन अछि इट हैज मोर एप्लीकेबिलिटी इट हैज मोर एप्लीकेशन देन द लीगल राइट हमते ही पर कनकरेंट लिस्ट यस कनकरेंट लिस्ट अछि बी रे हबो socio-economic planning ta 23 consider the following provisions under the DPSP as enshrined in the Constitution of India securing for citizens of India uniform civil code organizing village panchayat promoting cottage industry in rural areas securing for all that workers reasonable leisure and cultural opportunities which of the following are Gandhian principles that are selected in the DPSP principle of state policy प्लान डीपीएसपी को तीन भाग विभक्त कराई था गांधीयन ए सोशलिस्टिक गांधीयन लिबरल तो ये जो चार्टा डीपीएसपी देइची सेतिरे को डीपीएसपी टा गांधीयन डीपीएसपी भाव में परिगणित हुए उठरी तो इटा कोटा हबो बोली कहूछ कोटा कहि जा could have securing citizen of India uniform civil code it gote liberal principle article 44 आउ हमर जो रहिला तुमर कोन जोटा रहिला हमर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत सेटा कौन आर्टिकल 40 से गांधीयन प्रिंसिपल्स एटा आर्टिकल 40 हबो प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज सेटा 43 ए 43 हबो सेटा प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री जेटा 43 पार्ट हबो ठीक अछि एटा भी 43 हबो और एटा भी 43 एटा 44 आर्टिकल्स एउरा सब also देखो securing for citizens of India uniform civil code article 44 एटा liberal principle
Village industry Gandhian principles. It be Gandhian principles. Promoting cottage industry Gandhian principles. Promoting cottage industry, sorry. Promoting cottage industry ta Gandhian principles. Eita habo socialistic principle. Last socialist principles. Socialistic principles. ठीक अच्छी तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल अब बल से देखो तो आंसर हम 2-3 टा होची गांधीयन यूनिफॉर्म सिविल कोड लिबरल प्रिंसिपल सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रिजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी है सोशलिस्टिक समाजवादी नीति तेणु 2-3 आंसर हम 2-3 आंसर दीजिए तो आर्टिकल 43 टा कॉटेज इंडस्ट्री यस वेरी गुड वेल डन तो आसवा में नेक्स्ट क्वेश्चन को 2-3 हम 2-3 आंसर अच्छी तो 2-3 ओनली सी बी 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 एट और तेरे देखिबा बी Next question, under the constitutional arrangement in India, the state can impose reasonable restriction on the exercise of the freedom of speech and expression on various grounds. Which of the following constitute the grounds? What will be the answer? What will be the answer to the questions? C. Very good, Sonu, very good. C अब 1, 2, 3, 5. अच्छा. Yes, any other answer? जल्दी जल्दी आंसर दे दिया. और कौन आंसर अब? Hmm? 1, 2, 3, 5. Yes. Bonita. Yes, you are right. 1, 2, 3, 5. अच्छा ठीक है जी बड़ा आंसर बने आंसर एटा कोथरे अछि आर्टिकल 19(2) आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बुझि परछ तो धारा 2 रो धारा 19 रो ख उपधारा रे अछि एरा होछि कोन रेस्ट्रिक्शन 19(1)(a) रो रेस्ट्रिक्शन टा 19(2) रे अछि तुम तदरे 8टा ग्राउंड अछि तुरु 4टा 17-8टा ग्राउंड अछि डिफेमेशन अछि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अछि इनसाइटमेंट टू ऑफेंस अछि कोन फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज अछि किंतु इंटर स्टेट एटा नाही 1 2 3 5 हो ठीक अछि Asma, which of the following duties has been included in the Constitution of India through 86th Constitutional Amendment Act? कौन सा आंसर होगा? ठीक है चलते रहो 25 आंसर कौन कहलु 25 आंसर ए बी ज्योति प्रकाश सोनू ए ओके आंसर दियो जल्दी जल्दी आंसर दियो यस
बी हबनी ए हब ना एस टू 6 टू 14 से 86 रे ऐड हे जो ड्यूटी नंबर केते ड्यूटी नंबर एटा के ड्यूटी नंबर के एटा ड्यूटी नंबर के एटा एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे ऐड हे जोटा 21 ए रे जो अच्छी राइट टू एजुकेशन तारी पई ये राइट ड्यूटी टा ऐड हे ना हिची कि नहीं तो केते वर्ष पिला राइट टू एजुकेशन दिया जाउछि 51 के यस ड्यूटी नंबर के कहूछि पर 51 ए के 51 ए रे के सेटा होछि कोन 51 आर्टिकल 51 ए रो के yes son yes you are right बुझियला तनु 6 to 14 पई 0 ରୁ 6 पई कोड एजुकेशन अछि 0 ରୁ 6 एजुकेशन ता को आर्टिकल रे अछि 0 ରୁ 6 वर्षर पिला मानक पई कोड एजुकेशन ता लिखा अछि आर्टिकल 45 रे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 0 ରୁ 6 सेटाई 45 रे अछि सेटाई 45 रे अछि बुझियला 51 गणेश यस 51 पर 51 ए ना सेटा शशि रेखा नमस्कार 6 to 14 इज टच आर्टिकल 45 रे अछि वेरी गुड शशि रेखा 45 yes very good so that's kind of things then एटा कंफ्यूज करिवो ए दिटा कंफ्यूज करे कोन ए दिटा कंफ्यूज करे इट इज 6 ईयर नो ड्यूटी रहउची एज टू 6 इयर्स ठीक अछि एज टू 6 इयर्स तेनो आंसर कोन हबरे आंसर ए हबो ए इज राइट देखि दबा कोन क्वेश्चन अछि 26 नंबर which of the following is not correct a directive principle of state policy कोटा गोटे डायरेक्टिव प्रिंसिपल नुहे जल्दी आंसर दे दियो बी क्विक तुम जिते जल्दी दौड़ब आम से तुम पछ पछ दौड़ू ये साहित्य प्रेमी निरंजन दास निरंजन गुड इवनिंग यस बी हब डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इज ए फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कि पिला ने फंडामेंटल ड्यूटी तेणु आंसर हम एटा बी आंसर बी 27 एटा लास्ट क्वेश्चन हम 27 क्या होगा जल्दी दे आंसर दे दियो 27 बी 27 तो ना कोड बी कुछ आशीष 51 ए फुल को 51 एन सुन लो 51 ए एच हाँ 51 ए एच यस वेरी गुड एमती थरो रहले तो आईएएस आसी पॉकेट रे पसिबो से कोड जीवो आईएएस आईपीएस कोड जीवो से पॉकेट रे आसी पसिबो तो घरे बस्तीबो तो ताने आईएएस अपॉइंटमेंट दे जीवो बाबा चल थरो रुह सब थरो रहले नथिंग इज इम्पॉसिबल आराम से पढ़ापढ़ी करो किछि मटेरियल दरकार नहीं मटेरियल जो हमर जो बही पत्र पळे जो लक्ष टका किनी की कोचिंग दिल्ली जाई ये सब जिंस के पाठ पढ़े बहुत जिनस अवेलेबल अच्छे से आग से जोरा मिलूँ ताकू आग पढ़ तो देखिए सेटा आग मन रख देखिए बेसिक जिनस गुरा मन रख तापर देखिए तेणु बेसिक जिनस ओरिड होने कि मटेरियल नहीं ओरिड है आमर मन नहीं मन थिले उपाय आपे आपे आसीबो वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे ठीक अछि डोंट वरी अबाउट दैट 27 कौन हम असर्शन 27 टा बी अच्छा DPSPs are made non-justiciable by the Constitution. The country may not be able to provide all the rights to citizens at a time.
DPSP are non-enforceable. What is the basic difference between fundamental right and DPSP? The basic difference between fundamental right and DPSP is that fundamental rights are enforceable, whereas DPSPs are not enforceable. DPSPs are non-justiciable. But does it make DPSPs inferior to fundamental rights? No. Fundamental right, DPSPs are not subordinate to fundamental rights. They are equal. There should be a balance. In Minerva Mill case, 1980, Supreme Court says that balance between fundamental rights and DPSP is a part of basic structure of the Constitution. So you cannot overwrite DPSP in the name of fundamental rights, and the vice versa is also true. Bujhela? Then DPSPs are non-enforceable not because they are not important. DPSPs are being made are made non-justiciable because there is a lot of resources required for the implementation of DPSPs. DPSP रे जो सब कथा गुरा कही गोटे एग्जांपल नबु कि हमर धर जोटा डिकनसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हबो कि सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंप्रूवमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन हबो सेति पे सरकार को पैसा खर्च करियो पड़ियो संबल दरकार कटेज इंडस्ट्री प्रमोशन कराबो संबल दरकार पैसा दरकार लाइवलीहुड दिया जीवो राइट टू लाइवलीहुड जो 39 ए रे अछि लाइवलीहुड सेटा दिया जीवो सेति पे सरकार पे संबल दरकार रिसोर्सेस दरकार एते बड़ देश जनबहुल देश एते लोक तांकु सब जिंस देला बेल को समय लागिवो सेति पे डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन रे नॉन एनफोर्सेबल कर दिया गला किंतु 37 आर्टिकल रे कहूची डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एवरी स्टेट शुड टेक देम इनटू कंसीडरेशन व्हाइल मेकिंग पॉलिसी then DPSPs are non-enforceable na the country may not be able to provide all the rights to a citizen. Jadi enforceable hebo samaste court re jai basibe. Okay, so setipai DPSP the country may not both A and R true, but R is both A and true. R is the correct explanation of A. Answer D hebo. बुझी पड़ला आंसर कौन हबो एटा तार आंसर एटा तार कारण एटा असर्शन रीजनल एटा काहे कि डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल कराइछ because of this reason we did not have adequate resources to provide livelihood to all, but gradually we are providing. Manrega is what? Manrega is providing employment. 41 re अछि right to employment, right to work दर अछि 41 रे right to work सेटा इम्प्लीमेंट होउछि मनरेगा द्वारा लाइवलीहुड पे जो हमर अछि कोन से रे जो स्वयं सहायक गोष्ठी एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप अछि तो सेति पे योजना सब कराइछि तो सेगुडा इम्प्लीमेंट होउछि किंतु सरकार तार टाइम देखि की करूछि धीरे धीरे सेन बाध्य नो सरकार करिया सेति पे सेटा नॉन enforceable कराइछि but remember Minerva Mill case re Minerva Mill versus State of Union of India Minerva Mill case 1980 रे Supreme Court कहिले कि balance between fundamental right and DPSP is a part of basic structure बुझला पिलाने ठीक अछि तो सेति पे आंसर एटा आंसर कोन हो डी. This is all about of today's sessions पिलाने बाकी गुरा तो सब बोले कहूची तुमको warrior 20 point complete हे छि about 100 students have joined. It is a great thing. Thank you for their trust सेमानकर विश्वास सेमानकर आशा आगा 247 ओपीएससी ऊपर तांकर भरोसा सेटा निश्चित भाबरे हमकु आउरी एनकरेज करिवो भलो शिक्षा देवा पई भलो उत्तम और अपडेटेड शिक्षा देवा पई अड्डा प्लेटफॉर्म रे बहुत पिला जॉइन करछंती क्लास आरंभ हो जाई छी तनु जदि तुम माने सिविल सर्विस एस्पिरेंट अच्छो बा तुमरो को माने चाहूछंती जानिया पई तो यू कैन
take admission into the batch Warrior 2.30. It will coming soon, and no our Odisha batch re already pilamane admission neyi batch is going to start soon, and it is a complete comprehensive batch, unique batch in Odisha. I think no one in Odisha has started this batch. You will get comprehensive idea, but please wait. जेहेतु आम बैच डिक्लेयर करिछु तेणु आम निश्चित आरंभ करदेबू ताकू आम वाच करिछु जेहेतु प्रिलिम चली आ भितर बैच आरंभ हो जिवो कारण प्रिलिम तो घुंची गला तेणु विल स्टार्ट द बैच गेट इट सो डोंट वरी लेट से सही किंतु आम तुम सहित जहाँ जहाँ प्रमिस कराई से दि जीव तेणु तुम देखुच पिलानकर केते ट्रस्ट बढ़ुची तो अड्डा 247 उपरे तो थैंक यू फॉर दैट ट्रस्ट अगेन एंड थैंक ऑल ऑफ यू अगेन for viewing me, for being with me at the class. Every day 5 PM re a class rahibo. So thanks to all of you. Thanks for your coming.